A very good evening to everybody who has joined the class. Welcome to this very special class on YouTube Live. Just give me a minute. I am trying to check if all my words are visible on the screen, and as I confirm, it is. So let me jump into the class right away. And so yesterday also I took a live class on studying the entire literary history of English literature in 60 minutes. Yes, if you had attended that class, then you would know how useful that class was if you wanted to begin with NTA UGC NET English preparation, or you're in middle of it, or you are in the end phase where you want to perhaps have a good revision, a quick revision, and not waste much time but have all the relevant information. Then my yesterday's video was just a right spot. And dear friends, if you have missed it, then let me tell you, it is saved on the Unacademy Live's NTA UGC NET platform. So do subscribe to that platform and avail all of these wonderful videos. Now, when I was supposed to take this today's video, I had to think multiple times about all of these topics which could be very relevant for the paper, but also which are high in demand. And since I have been taking plus classrooms and special classes on the Unacademy platform since a long time, a lot of you have requested videos and classes on literary theory back to back. I do realize it is one of the most tricky areas of the syllabus, and most of you find yourself at sea when you have to study that paper, because we think that maybe the language is so technical or there is so much to remember, and sometimes direct line to line questions are asked from this unit, so you get confused कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें क्या करें. I'm sure everybody of us feels that way. But trust me, after having qualified UGC NET myself, I was able to identify the pattern of questions that are being asked from the literary theory area section. And I realized that questions are not very, inventive. They are not very surprising. Very direct questions are asked from this unit on literary theory. And, all you need to do is to have a grasp on the keywords and keynotes, की टॉपिक्स. ठीक है, तो उन कीवर्ड्स या की नोट्स के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पुट अप किया जाएगा. जैसे कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, इनमें फ़र्क क्या है. नाउ इफ़ यू हैव रेड कोलरिज's essay, यू वुड नो ये चीज़ें क्या हैं. बट इफ़ यू डोंट नो इन चीज़ों पे स्ट्रेस देना है, तो आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हो, बिकॉज आपको लगता है सब कुछ पढ़ना है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हो. पर मेरा फोकस इस वीडियो के थ्रू ये रहेगा टू टीच यू ओनली द रेलिवेंट स्टफ, द इम्पॉर्टेंट स्टफ, जिनके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी 99% होती है. सो रेस्ट अश्योर्ड फ्रेंड्स, इफ यू आर अटेंटिव फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ 60 minutes with me in this class, you are going to ace the literary theory questions in your NTA UGC NET paper, because I do assure you कि इस यूनिट में जो टॉपिक्स मैं करवाने वाली हूँ, जो कीवर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बियॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विद नेट, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विद टीचिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, विद टीचिंग एज अ प्लस एजुकेटर एट Unacademy. So you can just fasten your seat belts and get ready to hop on this ride with me of 60 minutes. Ab shayad 57 minutes, and let's, without any further ado, let's just jump into it. And मैं साइड बाय साइड कमेंट्स को भी चेकअप करती रहूँगी. सो आप में से जिन को लगता है कि कोई डाउट है पर्टिकुलरली, आपको कुछ समझना है या जानना है, मैं आपको साथ साथ वो सब भी बताती रहूँगी. सो वन ऑफ माई वेरी डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा, हैज़ ऑलरेडी ज्वाइंड इन, आई सी, एंड आई कैन ऑल्सो वेट फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल टू ज्वाइन, बट आई थिंक टाइम बहुत कम है, तो वेट नहीं करते क्योंकि क्लासेस सेव तो हो ही जाती हैं. लेट्स जंप इन टू द क्लास, एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स इन बिटवीन, डू पुट अप अ कॉमेंट देयर. आई एम राइट हियर लिसनिंग टू यू, ready to answer to your queries. All right, so let's begin with the class. And before starting, actually, I would just have to give this good reminder to everybody that this class is basically based on the very relevant little keywords. But I do have been taking classes on Unacademy platform from a long time, and all my classes are 100% centered bullseye on NTA UGC NET.
तो मेरी क्लासेस में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं होगा जो किसी और तरीके के पेपर से रेलेवेंट हो या फिर ज़्यादा सब्जेक्टिव या ज़्यादा क्रिटिकल हो, बिकॉज नेट में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता. नेट में ओनली ऑब्जेक्टिव factual trivia based questions are asked, and my classes are dedicated 100% to the kind of topic, material and questions जिनकी नेट में आने की probability highest रहती है. ठीक है. So in order to avail those classes, all you have to do is you have to subscribe to Unacademy, friends. बहुत ही कम फीस में, if you go to coaching centers, you order material from them, it costs you a fortune. एंड विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई रियलाइज कि उन मटीरियल्स का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. ठीक है. बट आई विद माई ओन पर्सनल हार्ड वर्क आई वॉज एबल टू क्वालिफाई UGC नेट बिफोर माई MA एंडेड. मेरे MA के फाइनल रिजल्ट आने से पहले मेरे हाथ में मेरा नेट का सर्टिफिकेट था. एंड मैं अब उसी एक्सपीरियंस से और उसी एक्सपर्टीज से कोशिश करूँगी कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब जल्दी से जल्दी अपना नेट क्वालिफाई कर लें. 2019 दिसंबर अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लें. ठीक है. सो टू become a part of that journey, that victory journey, all you have to do is you have to subscribe to Unacademy, and the best part is that you get a discount of 10% if you use my referral code Aishwarya Puri. That's my name, that's the whole referral code itself. So AISHWARYAPURI, ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. So you should not wait at all. Trust me, my classes, your hard work, your revision, your practice, and by the end of it, you will be on the path of success of qualifying NTA-UGC NET or JRF, as you wish. So let's jump into the class right away. And मेरी आज की जो क्लास है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेजर सारी पूरी की पूरी जो लिटरेरी थियोरी है for the syllabus of NTA-UGC NET in English, I'm going to cover the entire one in these 60 minutes. So of course we start with the father of criticism, the one who gave us the starting point from where we take our literary theory, and that was Aristotle. So the earliest ever work of literary theory that was written was in fact written by Aristotle, and that is called Poetics. It was written in the 4th century BC, and in Poetics he basically tries to define what the nature of tragedy is, how characters should be written in a tragic play, how the action should come about in a plot, how the plot should progress, how it should culminate, what the conclusion should be, and what kind of feelings should it emerge in the audience who are watching, who are viewing that play. All right. So Aristotle ने particularly tragedy की बात ही क्यों की? Because during those years, when Aristotle was alive, in the contemporary Greek society, the role of drama and in particular of tragedy was very important, because it was not only it was not only played for entertainment purpose, but it was also played for information purpose, for teaching purpose. All right. So एक play देखकर आपके अंदर किस तरीके की feelings जो है आती हैं, उसके हिसाब से हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उस प्ले का आप पे इम्पैक्ट क्या रहेगा और आप उससे क्या सीखेंगे. ठीक है. सो एरिस्टोटल के हिसाब से इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग फ्रॉम अ प्ले, इट शुड इवोक द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस. ठीक है. तो अगर मैं एक प्ले देख रही हूँ जिसमें एक ट्रैजिक कैरेक्टर है जिसके साथ कोई ट्रेजिडी हो गई है, और मेरे मन में उसको देख के ये डर आता है कि यार व्हाट इफ ये मेरे साथ हो जाए. ठीक है. या फिर मेरे मन में उस कैरेक्टर के लिए उस बेचारापन आता है कि यार बेचारा क्या हो गया इसके साथ, और ये किसी और के साथ कभी ना हो, मेरे साथ तो कभी ना हो. सो इफ दोज काइंड्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ पिटी, fear, sympathy arise in the audience, then the purpose of a tragedy is fully accomplished. So that is that is the point Aristotle is trying to make in his Poetics. एंड सो बिकॉज एक प्ले का या एक लिटरेरी वर्क का ऑडियंस पे क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है, इसको हम ऑडियंस centric approach to literature कह सकते हैं. So later on, by the time 20th century will come, a lot of different fields of criticism will arise, and one of them will be reader centric approach to literature, which basically focuses on the impact
the impact of a literary work on the readers and what interpretation they make out of it. तो हम बहुत ही conveniently और बहुत ही affirmatively ये बात कह सकते हैं कि reader centric approach to literature का जो pioneer था, जो उसका laying stone था, वो एरिस्टोटल ने डाला था अपने पोइटिक्स के थ्रू. ठीक है. एंड एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही क्रिटिकल की वर्ड जो कि इस ऐसे में, पोइटिक्स में एरिस्टोटल यूज करेंगे, और जो कि ना कि सिर्फ NTA UGC नेट पेपर में, बट आने वाले कई पेपर्स में, कई सदियों तक आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो वर्ड क्या था. वो है कैथारसिस. सो कैथारसिस इज नथिंग else but purgation of these emotions where they are exercised rather than exorcised. Okay, so if you are looking at a play, ठीक है, and you are feeling pitiful, you're fearful of what is happening to the tragic character. The tragedy of that character is evoking fear and pity in you. ठीक है, तो वो feelings एक high point लेकर, ठीक है, आपके अंदर इमोशंस को स्टर करेगी, आपके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स क्रिएट करेंगी. ठीक है, तो आंसू बहा के उन फीलिंग्स को निकालने की बजाय जरूरी है कि आप उस डर को अपने अंदर मेंटेन रखो ताकि उसका इम्पैक्ट आप पे पड़े. ठीक है, सो द फीलिंग्स हैव टू बी एक्सरसाइज्ड rather than exorcised. Exorcism क्या होता है? जब एक bad soul को good soul से आप extract करते हो. ठीक है, that is the exact word of the exact meaning of the word exorcism. पर यहाँ पे how we use exorcism is that जो feelings आपके अंदर stir हो रही हैं, rather than taking them out of your heart, of your body, you're actually letting those feelings of fear and pity stir inside you so that they create a lasting impact on you. ठीक है, so this is the major important part of poetics that Aristotle was trying to make in his essay. ठीक है, and with that we can now come a couple of centuries later to the country of England, and we come to the Elizabethan period when Sir Philip Sidney wrote this very famous essay called An Apology for Poetry. He wrote this essay in the year 1580. Okay, and इस essay में his attention is entirely towards the pleasure aspect of reading literature. ठीक है, so जैसे कि हमने अभी एरिस्टोटल के लिए पढ़ा कि एरिस्टोटल के लिए the purpose, the intention of writing something and presenting something is that it should create some kind of feelings in the audience. But for Philip Sidney, the purpose, the intention of writing something, of presenting something is purely for entertainment. ओके, सो ये जो एंटरटेनमेंट को लेकर जो फिलिप सिडनी के दिमाग में थॉट आता है कि लिटरेचर का जो सोल पर्पस है दैट इज टू एंटरटेन, ये आता कहाँ से है? सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि NTA UGC नेट का सिलेबस आप तब तक एस नहीं कर सकते जब तक आप एसोसिएशंस नहीं बनाते. सो लेट मी एसोसिएट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट विद सम ऑफ द क्लासिकल राइटर्स, पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट एंड देयर थियोरीज ऑन लिटरेचर. So basically the famous Latin poet Ovid, who wrote his famous Metamorphoses, he gave this concept of docris delectando, which basically means to teach by delighting. ठीक है, सो जैसे कि जो ये मूवी है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस मूवी तारे ज़मीन पर बाय आमिर खान, तो उसमें वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे जोकर बन के और नाच के, गा के, क्लासरूम से बाहर लेके जाके उनको सिखाते हैं. ही टीचर्स, ही इंस्ट्रक्ट्स बाय डिलाइटिंग. तो वही एक कॉन्सेप्ट जो है वो अबिड ने बेसिकली दिया था अपने लिटरेचर के लिए. एंड सिमिलरली रोमन होरेस, लैटिन राइटर होरेस, he said that a poem is a speaking picture with the aim to delight. Okay, so a picture which is speaking to you, which is delighting you, which is entertaining you, and at the same time it is telling you something. That kind of a picture is poem, and that is how a poem should be. So we can very conveniently say that drawing from these concepts, Sir Philip Sidney tries to emphasize on the pleasure aspect of reading literature. So he sort of, differentiates literature with philosophy. So according to Sir Philip Sidney, the purpose of philosophy is to uplift a human being from the general concepts of life. तो ह्यूमन बींग्स का, जब सोसाइटी अभी इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं हुई थी, सिविलाइजेशन अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, उससे पहले एक इंसान की जिंदगी में क्या होता था? रोटी, कपड़ा और मकान सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट
मकान नहीं तो कैन बी से झोपड़पट्टी, कैन बी से केव्स, राइट. सो जब तक सोसाइटी और सिविलाइजेशन अभी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तब तक एक आदमी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए खाना, पानी, ठीक है, अपने बॉडी को एक्सट्रीम वेदर से बचाने के लिए, कवर करने के लिए कुछ, और रहने के लिए और छिपे रहने के लिए, सेफ रहने के लिए सर के ऊपर एक छत, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी. बट एज द सोसाइटी मूव्स ऑन, एज वी एडवांस इनटू द वर्ल्ड, it became important for the human being to rise above those basic animal instincts, okay, and to express his expertise, his excellence as homo sapiens, as human beings, as an animal who is greater than the other animals, ठीक है. So we call ourselves animals, but we also simultaneously call ourselves social animals, a kind of animal who has, grown, in his brain, in his logic, from the rest of the animal kingdom, ठीक है. So वो sort of एक जो हमारा upliftment है, वो कहीं ना कहीं फिलोसफी ने जो है उसको एक पुश दिया. इट गेव अस पर्पस फॉर लाइफ, इट गेव अस द मीनिंग फॉर लाइफ, इट गेव अस द एबिलिटी and the wings on which we can take the flight of reasoning, questioning, understanding, etc. etc. ठीक है. सो सर फिलिप सिडनी के हिसाब से भी जो ये जो अपलिफ्टमेंट के लिए आपको जो पुश चाहिए, दैट फिलोसफी कैन गिव यू. बट इफ यू वांट टू लर्न, if you want to gain wisdom, gain knowledge, and get entertained simultaneously, or maybe to learn by getting delighted, then poetry is the right thing for you. So according to Sir Philip Sidney, pleasure is the primary motive of any piece of literary work. Moral or didacticism is only subordinate to it. So कोई अगर आप आज के टाइम में कई मूवी डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज देखते हैं, पीपल आस्क देम कि व्हाई इज देयर नो सोशल मैसेज इन दिस, व्हाई इज एवरीथिंग अबाउट एंटरटेनमेंट. सो सम डायरेक्टर्स दे विल से बिकॉज फॉर मी एंटरटेनमेंट इज एवरीथिंग एंड morality comes second to it. So अब फिलिप सिडनी का कॉन्सेप्ट आप इसी तरीके से इमेजिन कर लो कि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स दैट ही मेड, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द पोएट्री दैट ही इज राइटिंग, एंड ही इज टेलिंग द पीपल through his essay, An Apology for Poetry, he's saying that I'm sorry. He's apologizing. He's being #sorry not sorry for the fact that his poetry is not going to be so moralizing, but at least it's going to be entertaining and delighting. All right. So he is concerned with the general nature of literature and its function. So सॉर्ट ऑफ लिटरेचर को, लिटरेरी वर्क्स को, लिटरेरी पीसेस को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर पर्पस इन आवर लाइफ, व्हाट शुड बी, व्हाई शुड दे बी रेड, एंड हाउ शुड दे अफेक्ट आवर लाइफ्स. इन सब की जो नॉलेज है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे सर फिलिप सिडनी. ऑल राइट. एंड इसलिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का एक मिनिमल जो एक प्रोटोटाइप है वो हमें सर फिलिप सिडनी में दिखा. लेकिन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को आगे लेके जाने के लिए एंड इन मेकिंग इट अ लेजिटिमेट फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म, द पर्सन हु वाज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वाज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ठीक है. सो सर सैमुअल जॉनसन is basically known for many of his famous things, like he created the first ever English dictionary, but from literary point of view he is remembered basically for two things. First is that he wrote the lives of the English poets. So he took up a couple of great English poets and he looked into their biography. He looked into their various works that they had written. He looked into the kind of criticism and appreciation that they received from the readers and the people, and he compiled that particular set of information, and he created this literary masterpiece called as the Lives of the Poets. And till today it is widely read as one of the greatest pieces of English literary, his criticism. The next important work that he did, and which is very important from paper point of view for UGC NET English, is the preface to Shakespeare. So this was the first time ever that a writer took
took up the literary work of another writer and he critically analyzed it, and he pointed out all the good things and the bad things about it, the merits and the demerits of it. So, particularly Samuel Johnson would use words excellences and defects in order to describe the merits and demerits of Shakespeare. Okay, so whatever keywords I mentioned here, जिन जिन को भी मैंने डबल इसमें डाला है, डबल sorry, so you have to, जो भी highlighted है basically, you have to make sure that you remember them, because these are the kind of keywords that are most likely to be asked in the NTA UGC NET paper. All right, so in his preface to Shakespeare, he basically looks at the excellences and defects of Shakespeare. And what are the major excellences of Shakespeare? He says that he gives the just representations of general nature. That Shakespeare is more concerned with the general than the particular. And that is what contributes to him being a classical writer. Because over the years, the specific things, the particular things, they lose their charm. But it is actually the general things that will make more sense. Okay, for example, if for example, Shakespeare is talking about some kind of a masquerade in his play, ठीक है, या some kind of a night, ठीक है, या a duel between two knights, ठीक है, तो ये जो नाइटहुड था, उनके बीच में जो स्वॉर्ड से ड्यूल होता था, या फिर ये जो मैस्करेड्स होते थे सड़कों पे, व्हेन पीपल यूज्ड टू सेलिब्रेट वेयरिंग मास्क्स एंड एवरीथिंग, ठीक है. सो फॉर टुडेज person living in India, a person living in contemporary India, these things will not make sense. Because neither do we have knights in our society today, nor do we have swords and sword fightings and duels, nor do we have masquerades. Okay? So all of these very particular social elements do not make sense to us today. So if had Shakespeare been only about these particular things, then Shakespeare would not have been so relevant to us today. Then he would not have been one of the greatest writers ever produced in the world. But the reason that he is, in fact, the greatest writer comes from the fact that his plays try to lay their focus, try to throw more light on the general aspects of human nature and humanity. All right. For example, the kind of dilemma that Hamlet gets into when he finds out that his uncle has killed his father and his uncle and his mother are living together. The kind of jealousy that Othello feels when he is incited by Iago that probably his wife Desdemona is cheating on her. Okay? So all of these emotions that we see in these characters, जो Othello की jealousy है, जो probably Macbeth में जो madness है, जो कि Hamlet में जो confusion है, ये वो general human characteristics हैं, human tendencies हैं, that still make sense to us. Okay, that are still relevant. If a person would find out that his partner is cheating on him, so what kind of emotions would come into him? How angry would he feel about it? What would he feel like doing? ठीक है, वो सब चीज़ें आज भी उतनी ही relevant हैं जितनी शेक्सपियर के टाइम में थी. ठीक है, या फिर the grief of a son who has lost his father and who has also sort of lost the love and shelter of his pure mother, so-called pure mother. ठीक है, वो what that child would feel, what that boy would feel, those kind of feelings still make sense to us today, and it makes sense across cultures, across countries, across continents. ठीक है, these are basic universal human feelings, and nobody can put a cultural label to it, and hence Shakespeare is the greatest writer who had ever written, because he is concerned about the general, not the particular. So Sir Dr. Samuel Johnson will basically, in his excellences, he will try to say that Shakespeare has outlived his age. He is a classical poet, a classical writer, classical dramatist. A person becomes classical, his works becomes a classic when it travels through the tide of time and age. ठीक है, when across years and centuries he is still being admired, appreciated, read, published, etc. Okay, so Shakespeare is called a classic.
He has outlived his age because sudden wonders soon diminish, and what prevails is the stability of truth. His works are not limited by time, they have a universal and eternal appeal to them. All right. So, the whole point of reading Shakespeare is that it tells us something more about human nature and human character every time we read it or we watch the play. And it makes so much sense even 500-600 years after he had actually written it. So इसी बात को जो पहली बार जो critically जब किसी बंदे ने जो point out किया था या emphasize किया था, that was in fact Dr. Samuel Johnson. And after Dr. Samuel Johnson, just a couple of years later, because Dr. Samuel Johnson was in fact writing in the Augustan age, okay, in the latter half of the 18th century of 1700s, but it would actually be William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, whose lyrical ballads, which will be published in the year 1798, will usher in the Romantic age in English literary history. Okay, so first we will look at William Wordsworth. So William Wordsworth, in in coordination with in association with Samuel Taylor Coleridge, he published his lyrical ballads ka first edition in the year 1798, and it became an instant hit amongst the readers, amongst the people of England and across the Europe, and hence just 2 years later they had to come up with another edition of it. But in this another edition, William Wordsworth added a preface to it, and that preface, that piece of literary theory, that piece of literary prose work became a literary theory later on, because us essay में William Wordsworth is trying to highlight the importance of use of simple everyday language over poetic diction and decorum. All right. So basically William Wordsworth, as you all know, because मैंने कल की क्लास में ये बात डिस्कस की थी, that जो ऑगस्टन एज थी, जो 1700s का लिटरेरी सीन था, उसमें ये था कि लॉट ऑफ emphasis was being laid on classic poetic diction and strict metrical rules and strict adhesion to the classical writers and trying to imitate them. Okay, so that kind of strict imitation, those kind of strict rules were the order of the day in the Augustan age. But William Wordsworth had a basic problem with it. He said that any piece of literature, any work of literary creation should make sense to the common man. Hence uska matter, uska form और उसकी language common man की होनी चाहिए. ठीक है, there should be no strictness, there should be no technicality, there should only be spontaneous flow of powerful feelings. ठीक है, तो ये जो लाइन है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये पोइट्री को डिफाइन करती हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. William Wordsworth uses it in his preface to Lyrical Ballad, second edition, 1800 AD, and this question is on repetition. It comes in every kind of entrance exam या फिर नेट का एग्ज़ाम या फिर कोई भी स्टेट का TET एग्ज़ाम. ठीक है, सो ये आपको लाइन डेफिनेटली याद रखनी है. ये विलियम वर्ड्सवर्थ के ऐसे से है. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ was concerned with the simple everyday language to be used in poetry vis-a-vis poetic diction and decorum. So, what William Wordsworth also did, what kind of an experimentation he made with his poetry, is that you guys must always remember that, like in last class, in yesterday's class, I had particularly mentioned how the 18th century, the 1700s, that became a year when prose also grew in tremendous volume. Okay? It became popular among the people, and hence poetry had to find its specific place so that it will not be mixed with prose. So poetry became more poetical, it became more verse-like, it became more rhythmical, it became more metrical. Okay? All of those strict rules were being obediently followed in writing and reading of poetry, vis-a-vis prose. Okay? Which had no rhyming, which had no rhythm, which had no metrical structure. It was just a piece of literary work written with language and grammar. Okay?
So by the time we come into the romantic age, and William Wordsworth will try to turn the tables. He will try to introduce a more prose-like texture to poetry. He will try to move away from the Augustan conventions, and he will try to give a more generalized form, a more prose-like common form to poetry as well. And he will also try to move away from the artificiality in theme, matter and language of poetry towards a more simplistic style. तो अगर हम आज की सोसाइटी में जैसे कंपैरिजन लेते हैं कि सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो सिटी लाइफ है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और जो विलेज लाइफ है वो बहुत ही सिंपल होती है. तो उस तरीके की ही डिस्टिंक्शन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में क्रिएट करने की कोशिश की. एंड ही ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ टूवर्ड्स द कंट्री साइड, टूवर्ड्स द नेचर. He fell into the lap of nature and he was writing poetry on nature. Hence romantics को poets of nature भी कहते हैं most popularly. So what he was actually trying to do by moving away from the city life and city-based themes and coming into the lap of nature is that he was basically trying to remove the veil of artificiality from poetry, and he was trying to make it more and more organic, more and more natural. So that was the whole intention for writing so much on nature. तो ये एक जो बात है लोगों को जनरली नहीं पता होती है कि वाई इज इट दैट द रोमांटिक्स चोज नेचर एज देयर मेन थीम, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि दे वर सो मच इन लव विद ग्रीनरी और समथिंग, या फिर दे वर सच बॉटनिस्ट दैट दे हैड टू in fact start writing about it, but that's not so. They actually had a very social and political motivation behind retreating from the city life to the countryside, or to the life of nature. So that is what it is about. And now the person with whom Mr. William Shakespeare shared his association in writing lyrical ballads was Samuel Taylor Coleridge. And Samuel Taylor Coleridge का जो Biographia Literaria ऐसे है, which was published in the year 1817. So ये बात आप याद रखिए, ये order भी याद रखने की कोशिश कीजिए कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो Preface to Lyrical Ballads है, it was published in the year 1800s, and Biographia Literaria was produced in the year 1817. And इस बीच में जो है विलियम शेक्सपियर और सैमुअल टेलर कोलरिज को एक साथ ही पढ़ा जाएगा, लेकिन एक्चुअली डाउन द लाइन सैमुअल टेलर कोलरिज की जो पर्सनल थियोरी है टुवर्ड्स पोइट्री, टुवर्ड्स लिटरेचर, इट विल इमर्ज आउट टू बी कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट इट वाज ऑफ शेक्सपियर्स. तो जहाँ शेक्सपियर एक कॉमन मैन्स लैंग्वेज, नो आर्टिफिशियलिटी, नो ओवर कॉम्प्लिकेशन इन थीम्स की तरफ बात कर रहे थे, सैमुअल टेलर कोलरिज वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट distinctive poetic language, use of distinctive poetic language, use of distinctive special themes for the writing of poetry. So he basically shifts away from Wordsworth's pronouncement that poetic language should mimic the language of the common man. Coleridge holds that poetic language is a work of artifice. ठीक है, पोइट्री रियलिटी नहीं है, पोइट्री रियलिटी का एक इमिटेशन है, उसकी एक रिफ्लेक्शन है. ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं. नेचर या फिर लाइफ, ठीक है, या फिर नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल लीव्स और फ्लावर्स हैं, दे ग्रो ऑन देयर ओन, दे आर नेचुरल क्रिएशंस. However, poetry does not get created on its own. You have to work on it in order to create it. तो जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ एक स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, वहीं सैमुअल टेलर कोलरिज एक बहुत ही फोर्स्ड, बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही वॉलंटरी एक्ट ऑफ राइटिंग की बात कर रहे हैं एज फार एज पोइट्री इज कंसर्न. सो एज फार एज मोस्टली द क्रिएशन ऑफ पोइट्री इज कंसर्न. ठीक है, सो ही कॉल्स पोइटिक लैंग्वेज अ वर्क ऑफ आर्टिफिस विच इज स्पेसिफिकली क्राफ्टेड. उसको स्पेसिफिकली क्राफ्ट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है. Hence it should not lose its poetic quality. So when we are not looking at a thing which is natural, which will grow on its own, and when we have to sit down and write it and create it, so why not write it the way it should be written? Poem is a work of verse. It should have melody, rhythm,
मे बी रेपिटिशन, इट शुड हैव मीटर. तो अगर पोइट्री को ये चीज़ें ही डिफाइन करती हैं तो पोइट्री को इनके साथ ही लिखा जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं लिखा जाना चाहिए. दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ सैमुअल टेलर कोलरिज इन बायोग्राफिया लिटरेरिया प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1817. Now he gives us these three very famous concepts जो कि on repetition net में over the years repeat होते रहते हैं. So you have to definitely remember by heart these definitions. So he gives us this distinction between imagination and fancy. And imagination he will divide into two parts: primary imagination and secondary imagination. So primary imagination is basically the kind of imagination that all the human beings in the world possess by virtue of having a brain, or by virtue of having a mind. ठीक है? So he will call primary imagination the divine ability to create. ठीक है? तो कोई भी इंसान, एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, नॉट सो इंटेलिजेंट, अगर वो बैठ के कुछ सोचना चाहे, कुछ इमेजिन करना चाहे तो वो कर सकता है. ठीक है? तो ये जो नेचुरल एबिलिटी है हम सबके पास, इसको कोलरिज ने प्राइमरी इमेजिनेशन बोला है. सो ही विल ट्राई टू यूज अ कपल ऑफ फ्रेजेस फॉर इट, एंड आई हैव पर्टिकुलरली पुट those phrases for you up here, because ये paper में there's a good chances, there's a good probability that these can be directly asked. So you might be asked कि ये जो particular line है ये किस type के जो है imagination के बारे में बात कर रही है, primary या secondary या fancy की बात कर रही है या none at all की. So you must remember these particular phrases, okay? So one is the divine ability to create. Then he calls it the source of all animate power. He calls it involuntary perception which is involuntary, जिसको हमें force out नहीं करना पड़ता, हम अपने आप भी चीज़ें imagine कर लेते हैं. ठीक है? It is also the spontaneous act of mind. ठीक है? So ये जो spontaneous act of mind है, ये almost वही spontaneous flow of powerful feelings हैं जिसके बारे में William Wordsworth is talking about. So maybe, in Coleridge's language, William Wordsworth calls primary imagination the source of poetry. But Samuel Taylor Coleridge के हिसाब से it is actually the secondary imagination which is the source of poetry. So secondary imagination he defines as the power of the mind of the artist. ठीक है? Only an artist possesses the secondary imagination, या only an artist is able to create something out of secondary imagination. And he calls it the power of human mind to create by virtue of perception and recollection. ठीक है? So basically एक poet, एक writer, they take a retreat into the natural world, they look around themselves, they have feelings inside of them. फिर वो बैठते हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं. ठीक है? And whatever recollections they have of that memory, out of that they create a piece of literature, या they create poetry. ठीक है? तो इस तरीके का जो conscious act है, जहाँ पे there is recollection happening, there is memory involved, there is a very conscious voluntary effort to create something. That kind of creativity comes out of secondary imagination. It is more active and conscious. It requires will to work upon raw material. तो आपके सामने जो raw material पड़ा है, आपके सामने एक if you're supposed to write a poem on a book, then वो जो book आपके सामने पड़ी है, that is your raw material. But you will have to look at the book. You will have to have that will inside of you. आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए उसके ऊपर कुछ लिखने की, तभी आप उस पर लिख पाओगे. ठीक है? It is the root of all poetic activity. Every other individual does not have secondary imagination. Yeah, it is not highly developed in every individual. Only poets and writers and creators have secondary imagination highly developed in them. And a third category of a faculty of our mind is fancy, which is not a creative ability. It only combines what is perceived, unlike imagination which fuses and transforms. So try to look at it like, ये हमने स्कूल में एक बेसिक सी एक डेफिनेशन पढ़ी थी of physical reaction and chemical reaction. So physical reaction is when something, when the true nature of something does not change. For example, when we melt wax, ठीक है? तो वो wax एक stick form से melt होके liquid wax में convert हो जाती है. But if you
cool it down into a particular shape, it can go back to becoming that candle, wax in solid form. However, burning of a candle is a chemical process, because burning में जो है wax use होती है, utilize होती है, ठीक है, और उसमें जो है उसकी form permanently change हो जाती है. You can never bring back a burnt candle. उसी तरीके से जो फैंसी है, जो प्राइमरी इमेजिनेशन है या एनी काइंड ऑफ इमेजिनेशन, इट विल फ्यूज थिंग्स इनटू वन अनदर टू क्रिएट सम अदर काइंड ऑफ थिंग. तो ए प्लस बी, वन और वन मिलके टू बन जाएंगे, ठीक है. आप टू से वापस कभी वन शायद ना ला पाओ, बिकॉज टू विल नाउ बी अ न्यू थिंग ऑन इट्स ओन. However, fancy is like a physical reaction of science, ठीक है. इसमें दो चीज़ें एक साथ अटैच हो सकती हैं, एक साथ क्लिंग ऑन कर सकती हैं, बट वो कभी भी फ्यूज करके एक नई चीज़ नहीं बनाते, ठीक है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नोटिस बोर्ड इन योर स्कूल या कॉलेज, ठीक है. उसमें यू कैन यूज पिन्स to pin up important notices, charts, drawings, etc. But those charts या papers at any point they can be taken out of the notice board. They never become a part of the notice board. ठीक है. So that is something that differentiates fancy with imagination. तो primary imagination, secondary imagination, fancy. These are the three very, very important topics that Biographia Literaria tries to expound. It is written by Samuel Taylor Coleridge. Very important from NTA-UGC NET point of view. You have to keep it in your mind. Okay. And the next important, literary theory that will be expounded by yet another romantic poet will be the essay on defense of poetry, which will be written by Phoebe Shelley. This was written in the year 1821. तो अभी आप order देखिए, William Wordsworth का जो preface to lyrical ballads है, it got published in the year 1800s. 1817 में सैमुअल टेलर कोलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया आता है, एंड 1821 में पीबी शैली का डिफेंस ऑफ पोइट्री आता है. सो ये जो एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है नेट में. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर जैसे तीन रोमांटिक पोइट्स ने ही लिटरेरी थियोरी पे एसेज लिखे हैं, तो इनका जो है एक ऑर्डर बेस्ड, एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. सो डू कीप दिस ईयर्स ऑल्सो इन माइंड. सो पीबी शैली ने बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बताया था अपने डिफेंस ऑफ पोइट्री में, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन. सो डीफेमिलियराइजेशन में वो क्या कहते हैं? He says that poetry engages in the defamiliarization of world around us. It tears down the quote-unquote veil of familiarity from the world and makes us look at it afresh and anew. ठीक है. सो इफ देयर इज अ रूम एंड देयर इज फर्नीचर केप्ट इन इट, एंड आप उस रूम में जाओ, बोलो नहीं यार कुछ चेंज करना है, ठीक है. सो यू रीलोकेट योर फर्नीचर. सोफे को उठा के यहाँ से यहाँ, टेबल को उठा के यहाँ से यहाँ, लैम्प को उठा के यहाँ से यहाँ, एंड देन यू कॉल योर मदर फादर, यू लाइक लुक मॉम एंड डैड, आई रीडेकोरेटेड द रूम, ठीक है. और वो आके देखेंगे, अरे वाह, ये रूम ऐसा भी लग सकता था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है. तो रूम वही है, जगह वही है, स्पेस वही है, फर्नीचर वही है, बट विद लिटिल रीलोकेशन हियर एंड देयर, यू आर एबल टू लुक एट द सेम थिंग in a different light. You get surprised by it. So पीबी शैली के डिफेंस ऑफ पोइट्री में जो है ये डीफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो यही कह रही है कि पोइट्री कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है. पोइट्री एंगेजेस इन द डीफेमिलियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. तो जो चीज़ें हम अब से पहले भी देख रहे थे, समझ रहे थे, सुन रहे थे, पोइट्री उनको इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि हम उनको एक न्यू लाइट में देखना शुरू कर देते हैं. न्यू लाइट falls upon the familiar concepts, and we feel a sort of defamiliarization with them. We feel surprised by looking at the same thing in the new light, ठीक है. And that kind of an amazement is brought about by a piece of poetry. सो ये जो कॉन्सेप्ट है डीफेमिलियराइजेशन का, ये रशियन क्रिटिक्स ने भी 20th सेंचुरी में इसको बहुत यूज़ किया था अपनी न्यू क्रिटिसिज्म या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में. एंड डीफेमिलियराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी हद तक शैली इसको अपनी जिसे पोइट्री में बेसिकली मेंशन करते हैं, दैट विल बी हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ठीक है. तो अपनी दिस वेरी फेमस हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में इफ देयर इज एवर आस्क्ड कि कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्लाई किया था या यूज़ किया था, एक्सपाउंड किया था, इट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन. All right. So moving ahead, now comes one another very important
इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थियरिस्ट जो टाइम एंड अगेन नेट में इनके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं, दैट इज मिस्टर मैथ्यू आर्नोल्ड. Two of his very famous works are on translating Homer, which he published in the year 1862, and his essays in criticism. These are one of the greatest essays written in English language on English literary criticism. And इनके basically दो जो है editions आए थे. One was in the year 1865, and the other in the year 1888. Again, years have to be remembered. Do make sure that you remember the years. या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि essays in criticism कितनी editions में publish हुई थी. So the answer will be 2. One will be in 1865, the other in 1888. So Matthew Arnold, because he himself was a critic also, he was a poet, a writer also. So he knew he could do critical work also, and he could do creative work also. तो क्रिएटिविटी में पोइट्री राइटिंग या प्रोज राइटिंग आ गया, और क्रिटिकल वर्क में जो ये क्रिटिसिज्म है ये आ गया. सो ही वॉज अ गुड जज टू डिसाइड दैट विच काइंड ऑफ वर्क इज बेटर, या किस में क्या ज़्यादा अच्छा है, किस में क्या ज़्यादा बुरा है. So he basically says, and this is a line that I'm quoting from his own essay, Essays in Criticism, he says that the critical power is of the lower rank than the creative one. So Matthew Arnold is very much concerned with the power of creativity, and for him, critical power, critical ability of the mind is of a lower rank than the creative ability of the mind. And in order to judge a poetry, because for a critical writer, for a critic, the task is to judge, to critically analyze a piece of literature. तो किसी पीस ऑफ पोइट्री को जज करने के लिए, उसके मेरिट डीमेरिट को जज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो बेसिकली ही गिव्स अस टू क्राइटेरियन. वन वुड बी हाई ट्रूथ and the other would be high seriousness. ठीक है, so let me tell you guys one thing. Matthew Arnold was this one person, this one character who had a no fun, no delight policy in his life. All that he was concerned about was high truth, high seriousness. I think he himself also would have been a very serious person, had he been living. And उनके लिए जो ये क्राइटेरिया है, जैसे कि हमने सर फिलिप सिडनी के लिए देखा, फॉर हिम द एंटायर क्राइटेरिया, द क्राइटेरियन ऑन विच द मेरिट ऑफ अ लिटरेरी वर्क शुड बी बेस्ड शुड बी ऑन हाउ डिलाइटिंग एंड हाउ एंटरटेनिंग इट इज. हाउएवर मैथ्यू आर्नोल्ड बिल्कुल एक उल्टा व्यू पॉइंट रखते हैं. फॉर हिम द मेरिट ऑफ द एक्सेलेंस ऑफ अ पीस ऑफ पोइट्री comes from the matter of seriousness that it talks about, and the kind of truth that it is trying to expound या popularize. ठीक है, तो high truth and high seriousness are the two important merits, and critical power is of a lower rank than the creative power. ये दो important points हैं essays in criticism में. And he also tells us that without poetry, our science will appear incomplete, and most of what now passes us for religion and philosophy will be replaced by poetry. So, Mr. Matthew Arnold के लिए, religion, society, and so on and so forth, he feels that all of these other aspects of our life, of our society, like medicine, science, inventions, law, literature, religion, etc. According to him, all of these things will not make sense if poetry was not there. ठीक है, and poetry not of the pure entertaining kind, but poetry which has the merits, the excellences of high truth and high seriousness in them. ठीक है, and he also believes that literature का जो sole purpose है, that should be to stay away from politics. जैसे कि जो romantic poets थे, they were trying to make some kind of political arguments, political points out of their poetry, but Matthew Arnold did not believe in it. For him, poetry should be an end in itself. The creative ability of poetry, the creative excellence of poetry should be an end itself, rather than it trying to make some kind of a social or political commentary. And the goal of literary criticism should be of attaining pure disinterested knowledge. ठीक है, the object as in itself is really is. ये एक भी एक important line है उनके essay में से. So do remember कि ये line जो है मैथ्यू आर्नल्ड ने कही है, और ये basically poetry का अगर sole purpose है
to expound creativity या to tell us high truth या to give us high seriousness, then for him literary criticism का जो true purpose है, that is to attain pure disinterested knowledge. Disinterested means it should not be concerned with the politics of the time, it should not be concerned with the social aspects of the time of the contemporary age, it should only give us instruction and knowledge. ठीक है, सो ये जो है मैथ्यू आर्नल्ड के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं. नाउ विद मैथ्यू आर्नल्ड आवर वी विल end our 19th century तक का literary theory, and now we will come to T.S. Eliot, who was one of the greatest literary theorists from the very beginning of the 20th century. He's one of my most famous favorite poets also, and it was his famous essay called Tradition and the Individual Talent, which was published in the 1919, which gave the famous concept of impersonality. So impersonality में basically T.S. Eliot, he's telling us that whenever a poet begins to write a poem, ठीक है, he creates a distinction between his two personas. The poet, the author poet will be out of the poem, he will be recollecting his memories and he will be writing the poem, ठीक है, and then there will be a writer. Writer will be that part of that author's persona, that poet's persona, that will be found inside the poem. ठीक है, तो एक जो पोएट है वो तो ऑथर है, वो राइटर, वो ऑथर है, ठीक है, और पोएट का जो दूसरा पर्सोना है वो राइटर है. राइटर जो है he jumps into the narration, he jumps into the subjectivity of the poem to become a part of it. ठीक है, so it's so much like, okay, I have a couple of comments here. Okay, कृष्णा ने ओके, कृष्णा ने यहाँ पे एक बात कही है कि चौसर लैक्ड हाई सीरियसनेस, ही सेड यस. तो हाँ, कहीं ना कहीं मैथ्यू आर्नोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई सीरियसनेस, इसलिए फिर मैथ्यू आर्नोल्ड प्रॉबेबली चौसर वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेटर राइटर्स, ग्रेटर पोएट्स, बिकॉज ही लैक्ड हाई सीरियसनेस. सो वेरी गुड पॉइंट मेड कृष्णा. सो बेसिकली यहाँ हम अब जो डिस्टिंक्शन की बात कर रहे थे ऑथर और राइटर के बीच में, इसका मैं एक बहुत ही ईजी अगर एग्जाम्पल लेना चाहूँ, सो यू कैन लुक एट योर ओन एक्टिविटी एट सोशल मीडिया. ठीक है, सो एज पीपल, इवन if something wrong is going on in our lives, we will dress up, put up good clothes, go to good places, eat at good places, and put a picture on Instagram from there, put a Snapchat, put a Facebook post from there. ठीक है, and to the outside world it will look like, oh, लुक एट दिस पर्सन, ये कितना इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, ये कितना फन कर रहा है, ये कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कितनी अच्छी अच्छी जगह जा रहा है. बट एक्चुअली उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट ABC पर्सन on Facebook, on Instagram, on Snapchat, but that person inside that digital platform, inside that social media site is actually different from what the actual ABC person is. ठीक है, तो यही डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं T.S. एलियट अपनी impersonalization के कॉन्सेप्ट में. According to him, the greater a poet is able to create this distinction, the better the poetic work becomes. Because the person who creates is segregated from the person who suffers the ordeal of the modern life. So it is a common known fact, a lot of people try to tell us that in order to create excellent work, in order to be good at what you do, you have to keep your emotions out of it. ठीक है, not be emotional about stuff, so that you are able to do a work with objectivity. ठीक है, so T.S. Eliot भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं कि if a person is dealing with the ordeals of his life, if he's feeling not so good about his life, then by writing a poem and being too emotional about it, he might as well ruin it. ठीक है, सो एक पोएट के अंदर ये एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में जितना भी सफ़र कर रहा हो, वो अपनी पोइट्री को लेकर इमोशनल ना पड़े. ठीक है, और जब वो पोइट्री लिखने बैठे तब वो अपनी जो सैड एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ है उनको साइड में रख के, ठीक है,
और उनका जो बर्डन है वो एक और राइटर पर्सोना को दे दे और उस राइटर पर्सोना को वो अपनी पोएम में उतारे, ठीक है। तो वो अपनी ही पर्सनालिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, ऑथर पर्सोना को जो कि पोएम के बाहर रहेगी और राइटर पर्सोना को जो कि पोएम के अंदर जाएगी। Hence, poetry becomes something more than the conscious rendering of पर्सनल एक्सपीरियंसेस इनटू वर्ड। तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जब पोइट्स इनके बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो इनमें 100% सेंटिमेंटैलिटी नहीं होनी चाहिए, इनमें थोड़ी सी पोइटिक सेंस भी होनी चाहिए, इनमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए in order for that piece of poetry to become an excellent piece of poetry. So that is what the concept of impersonality is all about. It was given by T.S. Eliot in his essay Tradition and Individual Talent, published in the year 1990. Now coming to the last part of our presentation of our class today, and in fact one of the most important ones would be the concept of practical criticism or new criticism. दोनों ही criticism same चीज़ की बात कर रहे हैं, but practical criticism था ये basically इसी body का UK wing था, और न्यू क्रिटिसिज्म जो था वो इसी बॉडी का अमेरिकन विंग था. सो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज मोर प्रॉपरली एक्सपाउंडेड बाय डॉक्टर F.R. Lewis who was in England, and I.A. Richards ने जो है न्यू क्रिटिसिज्म एक्सपाउंड किया था जो कि अमेरिकन थे, लेकिन बेसिकली दोनों बात एक ही चीज़ की कर रहे हैं, और वो क्या है, दैट इज क्लोज एनालिसिस ऑफ द वर्क्स ऑफ पर्टिकुलर राइटर्स, decontextualized interpretation based on pure knowledge. So ये basically क्या बात कर रहे हैं इसमें, they are basically trying to say that okay, so sorry, I was just looking at some comments. So they're basically trying to say that in order for a piece of poetry to be read and understood properly, it is important कि हम उसके ऑथर के बैकग्राउंड को, उसके बैकग्राउंड को, ऑथर की हिस्ट्री को इन पंगों में ना पढ़ें, एंड वी ओनली लुक एट अ पीस ऑफ पोइट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स मीटर, इट्स रिदम, इट्स वोकैबुलरी, इट्स थीम, इट्स कॉन्सेप्ट. सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एक बुक से पोएम पढ़ना और एक पेपर में एक अनसीन पोइटिक कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. तो जब आप पेपर में आपको एक पोएम आती है, आपको नहीं पता कि हु रोट दिस, you don't know which year it was written, which country it belongs to, what is the thematic background of it, आपको हिस्ट्री नहीं पता होती, ठीक है. तो ये सब जाने बिना, when you are sitting in that exam hall, you are reading the poetry and you are answering the questions based on close analysis, close line reading of that poetry, that is called as practical criticism or new criticism, ठीक है. And this will be placed against a kind of reading of poetry जो हम normally घर में बैठ के करते हैं, या जो हम अपनी BA या MA में करते हैं, जिसमें कि हमें होमवर्क मिलता है एक पोएम को इंटरप्रेट करने के लिए, एंड देन वी गो बैक टू द होम, वी गूगल अबाउट द राइटर, द पोएट, वी गूगल अबाउट द पोएट्स बायोग्राफी, his ideology, we google about some themes and motives about that poem. तो ये जो background information आप लेते हो, इससे focus हटा के when you put your 100% entire focus on the piece of poetry itself, that is called as practical criticism or new criticism. So friends, like promised, 60 minutes and I will help you ace literary theory, and this was it. This is how we ace literary history, because trust me, इन 60 मिनट्स में मैंने आपको नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिटरेरी हिस्ट्री की जो लिटरेरी थियोरी की जो पूरी जो यूनिट है, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एसेज, इंपॉर्टेंट थियोरीज कवर करवा दिए हैं. एंड 99.9% इन टॉपिक्स के बियॉन्ड कुछ नहीं आता है, बिकॉज नेट जो है लिटरेरी थियोरी के यूनिट में कभी भी ज़्यादा सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. ऑल दे एक्सपेक्ट ऑफ यू इज़ टू नो द कीवर्ड्स, टू नो द मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑफ द एसे. एंड इस प्रेजेंटेशन में, इस क्लास में मैंने आपको वो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ा दिए हैं. सो फॉर ऑल द पीपल who have not subscribed to Unacademy yet, come subscribe to Unacademy and get the chance to avail amazing, interesting, informative videos such made
so that you are able to not only ace this paper but get so good grades, so good marks that you might as well, become a JRF scholar. Nothing greater than that, right? And no, but another thing that is great here is that you can get a discount of 10% if you use my referral code Aishwarya Puri. पूरे पैसे क्यों देने हैं यार? आप ये इतनी कम फीस है वैसे ही अनअकैडमी की, सो आप ना कि सिर्फ अपनी इतनी कम फीस में आप अपना पेपर को एस कर सकते हैं, बट आप एट द सेम टाइम आप 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर रहे हैं यहाँ पे. So you should not wait any longer, friends. Do go to the website of Unacademy, subscribe there, use my referral code to get a discount of 10%. ठीक है? That is one good benefit that you guys get out of it. And I will be soon back with another 1 hour 60 minutes class, जिसमें कि मैं एक ही क्लास में आपको नेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दूंगी, ईजी करवा दूंगी. एंड रेस्ट अश्योर्ड, मेरे प्लस प्लेटफॉर्म में, ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस. करंटली आई एम डूइंग एलिजाबेथन लिटरेचर, ऑल राइट. एंड मैं साइड बाय साइड क्विजेज भी ले रही हूँ, और क्विजेज भी लूँगी, मैं डाउट सेशंस भी ले रही हूँ. ठीक है? सो जो चीज़ें आपको बुक से पढ़ के नहीं मिलेंगी या नहीं समझ आएंगी, वो सब आपको मेरी क्लासेस से समझ आ सकती हैं. ठीक है? So I request everybody of you to do have a look at my videos on the Unacademy free platform, my special classes, and I'm sure you would love them, and you would not even waste a second, even a next second in subscribing to Unacademy. So do that. And with that, the class comes to an end. Thank you so much everybody for joining in, and I will see you at a later date. Till then, bye bye, take care.